do the relevant. So अब नौशीन किधर गई है? इधर ही हाँ, वो आप बताएं. Describe your findings. ये आप शॉर्ट केस जिस तरह होते हैं उसी तरीके से कर रहे हैं. and already lying comfortably on the couch, well oriented and cooperative from the examination. As I was given command for on examination, there was protuberant abdomen with straight line inverted valgus, nose, scar marks, nose prior, nose prominent in bulge veins, abdominal specific respiratory pattern, and on palpation, it is tender in the right hypochondrium. On palpation, there is lower border, there is lower border of liver, two finger press below the right coastal mountain, and upper border of liver is present in the both intercostal space. There is no sphenomegaly. Lower border of liver is large and it's round and irregular in consistency, irregular and firm in consistency, and there is no sphenomegaly, and the bladder is So what is your diagnosis? Anything else you want to tell? No. So considering your positive findings, what are they? Tender hepatomegaly. Anything else? इसके अलावा कुछ था? So what is your differential diagnosis or diagnosis on the basis of these two things which you found on the abdominal examination? Tender hepatomegaly is present, can present in acute viral hepatitis. An acute viral hepatitis. So you didn't tell about that whether the patient was having shifting dullness or Yes. Patient having shifting dullness on examination as peripheral fluid is present as evident by the shifting dullness. So now will you like to change your list of differential diagnosis or diagnosis, or it is still acute viral hepatitis for number one? Cirrhosis. So now your diagnosis is cirrhosis. So would you like to, I mean, it is more like some pathological term, ना? Cirrhosis जो है वो एक pathological term है ना? So would you like to improve this terminology of cirrhosis by saying it? Decompensated liver disease is on number one. Okay. Anything else? जी, anything else? Anything else? This is the only diagnosis. Can be Enteric fever? How? Do enteric fever have got hepatomegaly along with ascites? Did you see any patient of enteric fever with that? Anything else? Anything else comes in your mind with the enlargement of liver and ascites other than DCLD? some right heart failure. Right heart failure. So how would you check it on the bedside if patient is having right heart failure or not? By and did you find anything else on general physical examination or the general inspection of the patient, because you did not get time to do the relevant examination? So anything you found on the general overview of the patient? Pallor and jaundice. So is jaundice possible in right heart failure as well? Why? Why jaundice cannot be present in right heart failure? What is cardiac cirrhosis? Pericardial. What is cardiac cirrhosis?
anyone wants to answer? तो कर सकते हैं आप आंसर. कार्डियक सिरोसिस क्या होता है बेटा? पता है? पढ़ा है सुना? फेलियर की वजह से फिर पोर्टल हाइपरटेंशन ज्यादा होगी तो फिर लिवर के Yes. So jaundice can present in right heart failure as well. So but you have to see if patient is having JVP or not. ठीक है, you didn't get any time. अच्छा, if you got time, अभी मैं आपको time दे दूँ. So what would you like to check in the relevant examination? Starting from the hand. I would like to check for pallor. Why well? Is pallor present in DCLD or pallor present in right heart failure? It can. It can. Okay. What else you would see? I would like to check for clubbing. Clubbing, is it present in DCLD? Okay. Would you like to tell me more specific things? Because you know, Palmar erythema. चुप 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 Wait, चुप चुप. बोलना था. इस वक्त एग्जाम हो रहा है. देखो जो रेलेवेंट एग्जामिनेशन होता है ना, आपका जो कमांड होती है उसके साथ जो रेलेवेंट एग्जामिनेशन होता है उसमें यू नॉट सपोज टू टेल द होल जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन. यू हैव टू टेल ओनली थिंग्स व्हिच आर एसोसिएटेड विद द फाइंडिंग यू गॉट in that short case. I would like to check for palmar erythema, wasting of muscles. Wasting of muscles. Why wasting of muscles? In DCLD or right heart failure. You're getting what I'm trying to teach you. Yeah. कि आपने जो चीज पिक की है शॉर्ट केस के अंदर, आपने उससे रिलेटेड जो डीडी बनाया है, उससे रिलेटेड आपने रिलेवेंट एग्जामिनेशन करना है या मुझे बताना है? तो वो बताए ना. Relative with those jaundice, और pedal edema, breast. what are the stigmatas of liver disease? Dupuytren contracture, Palmar erythema, spider angiomas. मार्क्स या टैटू मार्क्स. ठीक है, अगर पेशेंट मेल है तो आपने लॉस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेयर, गायनेकोमेसिया, ठीक है, ये चीजें देखनी है. Spider angioma, caput medusae. एंड जेवीपी. सो अगर ये नहीं भी आ रहे तो चूंकि ये इंपॉर्टेंट नेगेटिव फाइंडिंग है तो यू हैव टू टेल कि आई वाज अनेबल टू see any Dupuytren contracture or Palmar erythema or IV needle marks or JVP was not traced, there was jaundice or there was no jaundice, there was lymphadenopathy or there was no lymphadenopathy, pitting edema was there or it was not there. ठीक है, ये बताना होता है. अच्छा, अभी हमने दो बनाए इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस. एनीथिंग एल्स? कोई और भी इसका डायग्नोसिस बन सकता है एक पेशेंट जिसमें आपकी साइटिस भी आ जाए, पेटोमेगाली भी इसमें आ जाए. Anything else? This is just a way to stimulate your brains कि वो critically think करें. क्या और क्या हो सकता है यहाँ? इस साइटिस है, पेटोमेगाली है. क्या? Gastroenteritis. अल्लाह, gastroenteritis में जी, yes. ये आप लोगों में से निकल रहा है ना. The problem is not this कि you don't know anything. You know. But you don't know कि आपने actually you have not gone through that process ना, वो एग्जामिनेशन वाला प्रोसेस है. और मेरा मकसद सिर्फ आपको ये है कि आप उस प्रोसेस में से एक दफा ओरिजिनल एग्जाम से पहले आप गुजर जाएं, ताकि आपको पता हो कि आपने करना क्या है और आपका एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट क्या करता है. मेलिग्नेंसी हो सकती है, कोई भी इंट्राएब्डोमिनल मेलिग्नेंसी, बातें नहीं करो, लिम्फोप्रोलिफरेटिव है या माइलोप्रोलिफरेटिव है या प्राइमरी मेलिग्नेंसी ऑफ लिवर है. ठीक है, वो सब जो है आपकी ऑर्गेनोमेगाली भी कर सकती है, मतलब उसमें हेपेटोमेगाली, स्प्लीनोमेगाली भी हो सकती है, एसाइटिस भी हो सकती है, एंड बिकॉज ऑफ मेटास्टेटिक लिवर डिजीज भी आपको जॉन्डिस मिल सकता है. सो मेलिग्नेंसी के हवाले से आप क्या रेलेवेंट एग्जामिनेशन में चीज करेंगी? तीसरा हमने मेलिग्नेंसी बनाया, गेटिंग माय पॉइंट. मेलिग्नेंसी के हवाले से आप क्या चीज रेलेवेंट एग्जामिनेशन में यू वुड लाइक टू डू? यस,